Well, the next attribute is actually three separate, but they're all related together. अगला जो हम खसूसियत पढ़ेंगे वो है God is eternal. खुदा एक खुदा इटर्नल खुदा आखिरत का खुदा है, आखिरत का खुदा है. God is self-existent. खुद जीता है. नहीं सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ खुद एग्जिस्टेंस, अपनी मदद नहीं, खुद मुख्तार. And the last one is unchanging. खुदा हमेशा का खुदा है. दूसरा खुद मुख्तार है और अनचेंजिंग, ना तब्दील होने वाला खुदा है. Do you want to write that? No, it's not pretty okay. And so again, what we'll do is we'll read some verses and we'll talk about what each of these. दोबारा से हम आयत पढ़ेंगे और जानेंगे इन तमाम खसूसियात का आपस में क्या मकसद है. So the first verse will be from Psalm 90. पहली आयत होगी ज़बूर 90 से 90, verses 2 through 4. ज़बूर 90 2 से 4 आयत. And what we're talking about is what does it mean when we say God is eternal? और हम इस बात पे गौर करेंगे कि खुदा हमेशा का खुदा है. So I will read verses 2 through 4. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. You turn man to dust and say, return, O children of men. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, and like a watch in the night. इससे बेशतर के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया. अज़ल से अबद तक तू ही खुदा है. तू इंसानों को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ए बनी आदम लौट आ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर. So when we think about what does it mean for God to be eternal, it means that God had no beginning, nor does he have an end. जब हम इस बात पे गौर करते हैं कि खुदा हमेशा का खुदा है, तो इससे ये साबित होता है कि खुदा का ना कोई माजी और ना ही कोई हाल है और ना ही कोई मुस्तकबिल है. खुदा हमेशा का खुदा है, अब्दी खुदा है. That's hard for me to understand. ये मेरे लिए मुश्किल है समझना. Because we as humans, we measure everything at the point that we were born, and in the future, the point of death. एक इंसान की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से ये बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को नापते हैं अपने पैदा होने से लेके हम अपने मरने तक. We as humans are bound by time. हम जो इंसान हम वक्त की वजह से बंधे हुए हैं. And we can't get away from the fact that as we've been sitting here, an hour has passed. हम इस चीज़ को नहीं An hour has gone by. कि हमारा 1 घंटा बीत गया है, हम इस चीज़ को नहीं झुठला सकते. But God is not contained within time. Actually, God created time. खुदा टाइम में बंधा नहीं हुआ, खुदा ने वक्त को बनाया. But God didn't create time for himself. He created it for us. लेकिन खुदा ने वक्त को अपने लिए नहीं था बनाया, हमारे लिए बनाया. And so the fact that God is eternal outside of time is hard for us to understand. ये खुदा अब्दी खुदा है, ये बहुत मुश्किल है समझना. This verse is talking about how God is outside of time and that man is contained in time itself. इन आयत से हमें पता लगता है कि किस तरह खुदा वक्त
के अंदर नहीं, वक्त से बाहर है, और किस तरह इंसान वक्त के अंदर बैठे हुए हैं। It's talking about the brevity, how few years that humans actually live on this planet. इसमें पता लगता है कि किस तरह कुछ साल पहले इंसानों ने अपनी जिंदगी बसर की इस प्लेनेट पे। The fact that again that God is outside of time and he's not affected by anything that happens within a given time frame. फैक्ट ये है कि खुदा वक्त में नहीं आता, खुदा वक्त से बाहर है, और बहुत सारी चीजें जो कि इस वक्त में चल रही हैं, जो इर्द-गिर्द हो रही हैं, वो उन सब के बारे में जानता है। So later we'll talk about God is all knowing. बाद में हम बात करेंगे कि खुदा सब जानता है। One relation here is the fact that because God is eternal, outside of time, he knows everything from beginning to end. एक रिश्ता ये कि खुदा अब्दी खुदा है, इस वक्त से बाहर है और सब जानता है, हमारे इर्द-गिर्द जो हो रहा है हमारे बारे में। So God does not have to wait for a few more hours to know what's going to happen this afternoon. He already knows. खुदा के लिए ये जरूरी नहीं कि खुदा इंतजार करे कुछ घंटे पहले कि इस कुछ घंटे के बाद क्या होगा, खुदा सब जानता है। Another verse, not too far from Psalms, is Isaiah. यशाया chapter 40, verse 28. 28 आयत। Isaiah chapter 40, verse 28. and again I will read in English. Have you not known? Have you not heard? The everlasting, the Lord, the creator of the ends of the earth, never faints nor is weary. His understanding is unsearchable. क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं सुना कि खुदावन खुदाई अब्दी व तमाम ज़मीन का खालिक थकाहट नहीं और मांदा नहीं होता, इसकी हुकूमत अदरत से बाहर है। So here again we have the same concept that God is eternal. He's not affected by time itself. इस आयत में हमें दोबारा से एक रेफरेंस मिलता है कि खुदा अब्दी खुदा है, खुदा वक्त में नहीं गिना जाता। It also says that God never faints nor is weary. In other words, God does not get tired. यहाँ पे ये भी लिखा है कि खुदा थकता नहीं। As the years pass, God does not get tired or worn out. जैसे साल गुजरेंगे, कुछ सालों के बाद आप ये नहीं कह सकते कि खुदा बूढ़ा हो जाएगा, खुदा थक जाएगा। Because God has always been and God will always be. क्योंकि खुदा हमेशा था और हमेशा रहेगा। God does not age. खुदा की उम्र नहीं है। Unfortunately for myself, I know that you guys as well, every year we age. Every year we feel probably a little more tired and worn out, but God never. हमारे सबके साथ यही है, मेरे साथ और आपके साथ भी है कि कुछ सालों जैसे साल बढ़ते हैं आप बहुत थकते जाते हैं और कमज़ोर होते जाते हैं, लेकिन खुदा के साथ ऐसा नहीं। So one last verse here related to God's eternality. एक और आयत जो कि अब्दी खुदा के बारे में हमें बताती है। And this one you won't have to move far because it's also in Isaiah 40. क्योंकि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ये भी यशाया 40 बाब में है। Now verse 6 through 8. 6 आयत से 8 Verse 6 through 8. Chapter 40. Same chapter. So I will read in English. The voice said, "Cry out." And he said, "What shall I cry? All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withers and the flower fades, because the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever." एक आवाज़ आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं? हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद।
घास मर जाती है और फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ घास मर जाती है, फूल कुमलाता है, और खुदा का कलाम अबद तक कायम है। आमीन। So here we have eternality, but the eternality is related to God's word. यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो अबद तक के बारे में पता लगता है कि खुदा अब्दी है, अबद तक कायम है। If we go back in history 1,000 years, अगर हम हजारों साल पहले चले जाएं, हिस्ट्री को देखें, what were they reading? वो कौन थे? The Word of God. वो भी कलाम मुकद्दस पे ही बातें चलती थी। God promises also that 1,000 years from now, if He hasn't returned yet, the Word, it will still be in place. The Word is eternal. हजारों साल पहले जो खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में कहा था, ये आज भी हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। So the physical things of the earth, His creation, plants and animals, they will all pass away. But His Word, eternal. जो चीजें खुदा ने बनाई, पौधे, जानवर, वो सब कुछ गुजर गए, लेकिन कलाम मुकद्दस वैसा ही है और अब्दी कलाम और कलाम खुदा का अब्दी रहेगा। So think about how we invest our lives. Many people invest their lives in all of the physical things of the world, but they're gonna go away. They're gonna be done away with soon. हमें सोचने की जरूरत है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी लोग दुनियावी चीजों में अपनी जिंदगी को सर्व करते हैं और इसी तरह गुजर जाते हैं। But the Word of God, it will remain forever, eternal. लेकिन खुदा का कलाम, खुदा के अल्फाज हमेशा अब्दी रहेंगे। So when we preach, when we learn, when we teach the Word of God, we are teaching something that is eternal, will last forever. It is not like we're putting our time and effort into something that will pass away. जब हम किसी को सिखाते हैं कलाम मुकद्दस के बारे में, तो ये ऐसा है कि आप किसी को अब्दी कलाम सिखा रहे हैं जो कि वक्त के साथ गुजरेगा नहीं, सेम रहेगा। Now we shouldn't be surprised that the Word is eternal, because we need to remember that from John chapter 1 that we just read, that the Word is Jesus Himself. हमें कलाम मुकद्दस ये हमें हैरान होने की जरूरत नहीं कि कलाम मुकद्दस अब्दी है, क्योंकि जैसा कि हमें यूहन्ना के अंजील में पढ़ा कि खुदा खुद कलाम है। So Jesus is just as eternal as God, because again the Trinity, they are one. क्योंकि यीशु मसीह भी अब्दी हैं, क्योंकि ट्रिनिटी में हमें पता लगता है कि यीशु मसीह खुदा और रूह कुद्दस तीनों एक ही चीज़ है। Let's go to the second attribute here, and that's God is self-existing. And the first verse will be in Exodus chapter 3, verse 14. Exodus chapter 3, verse 14. I know that when we read this verse, you'll probably be very familiar with this verse. And I will read in English. And God said to Moses, I am who I am. And He said thus, you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इस्राएल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। So what does this tell us? This tells us that God is self-existent. He can be no other thing than self-existent. इस आयत से पता लगता है कि खुदा खुद है, किसी ने खुदा को नहीं बनाया, खुदा खुद अपने आप में खुद है। If God was not existent, He would not be God. अगर खुदा को किसी ने बनाया होता तो वो तब खुदा ना कहलाता। But it also tells us that God is completely free from any outside dependence. He does not depend on anything outside of Himself. एक और चीज से हमें मालूम पता लगता है कि खुदा को किसी ने बनाया नहीं, खुदा किसी पे डिपेंड नहीं करता, खुदा अपने आप में खुदा है।
all of us, we depend on other people. हम सब किसी न किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं. You can think about how many other people you interact with every day, and you need those people. आप ये सोच सकते हैं कि आप रोजाना किन किन शख्सों से मिलते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, और आप उन लोगों से किस तरह मिल सकते हैं, मिलने की वजह क्या है. But God needs no one. लेकिन खुदा को किसी की जरूरत नहीं. He's self-existent. खुदा खुद में खुदा है. God in three persons, Father, Son, Holy Spirit of God, they need no one else. They are self-existent. तीन शख्सियात, खुदा, यसू मसीह और रूह कुद्दस, ये तीनों आपस में एक ही हैं और ये खुद में खुद हैं. It also tells us that happiness and fulfillment is contained within God Himself. एक वो चीज़ हमें पता लगती है कि खुशी हमें खुदा से मिलती है. In other words, my wife, right, brings me happiness. My children, they bring me happiness. God brings Himself happiness. खुदा खुद खुशी फैलाता है. जब मेरी बीवी खुश होती है, जब मेरे बच्चे खुश होते हैं, तो मैं खुश होता हूँ. And when we think about that again, that's very difficult for us to understand because we always think of those things outside of us that make us happy. Maybe a football game on TV that makes us very happy. But for God, it's all within Himself. खुदा में खुद खुशी मौजूद है. हमें तो दूसरी चीज़ें खुश करती हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मुझे फुटबॉल मैच है, सॉकर मैच है, वो मैं देख के खुशी होती है. लेकिन खुदा को किसी चीज़ से खुश होने की ज़रूरत नहीं. खुदा में खुशी अवेलेबल है. खुदा खुद खुश है, खुशी है. When we think scientifically, because I'm a science teacher, what this means scientifically is that God created everything. In other words, everything that we see had a beginning. It did not exist by itself. It had to be created. But God was not created. He was self-existent. एक साइंसदान होने की हैसियत से, जैसा कि मैं साइंसदान हूँ, कि ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा ने ये तमाम चीज़ें बनाई. ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं बनी और खुदा को किसी ने बनाया नहीं. खुदा पहले से ही मौजूद था. We create many things. Maybe we paint a picture and we say we've created artwork. हम बहुत सी चीज़ें खुद बनाते हैं. हम एक ऐसा कर सकते हैं कि हम एक तस्वीर बना लें और हम ये कह सकते हैं कि मैंने ये तस्वीर बनाई, मैंने आर्ट का काम किया. But we really didn't create anything. लेकिन हमने नहीं बनाया. We only used what was already available to us. हमने सिर्फ वही इस्तेमाल किया जो हमारे पास मौजूद था. God created everything. खुदा ने बनाया सब कुछ. And we continue. This set of verses again is for me one of my favorite verses. This is in the book of Acts. It's a New Testament. The book of Acts, chapter 17, verses 24 through 25. I will read in English. God, who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is He worshipped with men's hands, as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है. आमीन. And this verse again, it's very important because at this point in history, many people felt that God lived within certain structures or temples. Same thing out on the streets here today. It's often believed that God lives in little structures or little temples, but God says, no, I don't live in any of those places. I am self-existent. I'm outside of any of that. ये आयत बहुत अहमियत रखती है क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि खुदा मुख्तलिफ चीज़ों में जिंदा है.
जैसा कि हमारे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के मबूद बनाए जाते हैं कि खुदा इन मबूदों में जिंदा है, लेकिन ये आयत इन चीज़ों को झुठलाती है। And this verse also again tells us that God needs absolutely nothing from us. We can give to God nothing. He doesn't need it. ये आयत हमें दूसरी बात ये बताती है कि खुदा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हमारे से, हम खुदा को कुछ भी नहीं दे सकते। In other words, God was not lonely, and because He was lonely, He wanted to create us because He needed someone to be with Him. That's not true. कि आपने जैसे कि सुना होगा कि खुदा अकेला था और खुदा ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें बनाया, लेकिन ये सच नहीं, ये गलत है। God is completely happy with Himself, self-existent, and He needs nothing from you. खुदा को इंसान से कुछ लेने की जरूरत नहीं, खुदा अपने आप में खुदा है, खुशी खुदा के अंदर है। But this self-existence also teaches us another fact, because the Bible often talks about idols and the fact that idols are dead. इस वर्ड के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, सेल्फ एग्जिस्टेंस के बारे में, क्योंकि खुद कलाम मुक़द्दस भी कहता है कि मबूद मौजूद थे। So God is truly the only thing that is living. कि खुदा ही एक ऐसी हैसियत थी, एक शख्सियत थी जो कि खुद में जिंदा थी, खुद में अवेलेबल मौजूद है। You know, the theory of evolution says that all things came about by chance over time. I don't believe that for a moment. आपने एवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ी होगी कि जो ज़मीन थी वो खुद ही बनी, एक बिग बैंग से बनी, ये लेकिन सच नहीं, मेरा यकीन खुद भी नहीं है इस बात पे। How did a living thing come from non-living? कैसे एक जिंदगी किसी ना जिंदगी से आ सकती है? God is the only self-existent person. खुदा खुद में खुदा है, सिर्फ यही एक शख्सियत है जो कि खुद बनी हुई है, खुद मौजूद है। And if you remember in the story of creation, it says that God breathed life into Adam. जब आप क्रिएशन की स्टोरी पढ़ते हैं, जब आप पैदाइश की स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें पता लगता है कि खुदा ने अपनी सांस फूंकी एक आदम में। And so it is from God that existence comes. ये खुदा से जिंदगी मिलती है हमें, खुदा से जिंदगी आती है। And the last that we'll talk about here is God is unchanging. आखिरी हम इसमें बात करेंगे अनचेंजिंग, क्योंकि खुदा ना तब्दील होने वाला खुदा है। And that means that God is constant. He doesn't change His mind. इससे हमें पता लगता है कि खुदा एक ही है, खुदा सेम है और खुदा ना चेंज होने वाला खुदा है। The verse that we'll go to is in Psalm, हम ज़बूर chapter 102, 102 ज़बूर verses 25 through 27. 25 से 27 आयत, ज़बूर 102 25 से 27। Psalm 102, 25 through 27. And I will read in English. Of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will endure. Yes, they will all grow old like a garment. Like a cloak, you will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सनत है और नेज़ हो जाएंगे, पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे, तू उनको लिबास की मानद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे, तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हुजूर कायम रहेगी। आमीन। So here we have the contrast again between earthly things that will perish and of course God who is eternal but always remains the same. यहाँ पे दोबारा हमें पता लगता है कि उन दुनियावी चीज़ों के बारे में जो कि एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, और उस खुदा के बारे में जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। Often even within one day, from the morning to the afternoon, my whole attitude and emotions have changed. कुछ दफ़ा कभी कभार एक दिन मेरा जो एहसास होते हैं, मेरे इमोशन होते हैं, तो जो खसूसियत होती हैं कभी कभार बदल जाती हैं।
But God doesn't change. He doesn't fluctuate between emotions. लेकिन कभी भी खुदा नहीं तब्दील होता, खुदा कब सेम रहता है। And we can trust in God. This is something that should comfort us because God will not change all of a sudden. इस चीज़ पे हमें खुदा पे ईमान रखना चाहिए, हमें रखने की ज़रूरत है क्योंकि खुदा कभी बदल नहीं सकता, खुदा ना तब्दील होने वाला खुदा है। Can you imagine worshiping a God that on one day expected one thing and on a different day expected something else? क्या आप ऐसे खुदा पे यकीन रख सकते हैं कि जो कि एक दिन तब्दील हो जाएगा और दूसरे दिन तब्दील हो जाएगा? But many people around the world live that exact same way. लेकिन काफ़ी इस दुनिया में काफ़ी लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं Because they don't worship the God of the Bible. क्योंकि वो कलाम मुक़द्दस वाले खुदा की परस्तिश नहीं करते। Many people here in Thailand, they constantly are trying to appease the spirits, appease who they call God, because they really don't know if that God will change or if that spirit will change. इस बैंकॉक में, थाईलैंड में जो लोग हैं, थाई लोग हैं, कभी कभार रूहों से काम लेते हैं, रूहों की परस्तिश करते हैं, कभी बुतों की परस्तिश करते हैं। उन्हें खुद भी कंफर्म नहीं कि ये खुदा एक ही है। And that should be a scary thing. ये बहुत डरावनी बात है। But I am very happy that as a Christian, I know that God is unchanging. मैं बहुत खुश हूँ कि एक मसीह होने की हैसियत से मैं उस खुदा पे यकीन रखता हूँ जो कि कभी तब्दील नहीं हो सकता। So God doesn't grow, He doesn't develop, He doesn't evolve over time, He doesn't change. खुदा कभी भी बढ़ता नहीं, खुदा में कोई भी तब्दीली नहीं आती, खुदा एक ही है। And this also points to the fact that God is all powerful, and we'll talk about that as our next attribute. एक फैक्ट हमें इसमें मालूम पता चलता है कि खुदा बहुत ताकत रखने वाला खुदा है। हम इस खसूसियत के बारे में आगे पढ़ेंगे। Okay? Think about a job that you worked on, and you have a boss, you have someone higher than yourself. आप ऐसा सोचें कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, आपका एक बॉस है जो आपसे ऊपर की हैसियत रखता है और आप उसके नीचे काम कर रहे हैं। So your boss has the power to look at you and say, do this, do that. तो ऐसे कि आपके बॉस के पास ताकत है, आपको वो कहीं भी काम दे सके, आप ये करो, आप ये करो। In fact, you cannot be unchanging yourself because you're always depending on the person above you. आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते अपने काम को क्योंकि आप अपने बॉस के हुक्म की ताबीर कर रहे हैं। If you want to keep your job, you need to change and do what the boss says. अगर आप अपना काम अगर आप उस वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, जो आपका बॉस कहेगा, मालिक कहेगा, आप वही करेंगे अपनी नौकरी बचाने के लिए। But see, this points to the fact that there is nothing, no one higher than God. इससे हमें पता लगता है कि कोई भी खुदा से ऊपर नहीं। God doesn't need to change because He is God and nothing is higher. खुदा को तब्दील होने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदा से ऊपर कुछ भी नहीं। There is no power that can change God's mind. कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो कि खुदा के सोच को तब्दील कर सके। There's no force that can make God do something different than He wants to do. कोई भी ऐसी फोर्स नहीं, कोई ताकत नहीं जो कि खुदा को कुछ और करने पे मजबूर करे। And again, that's comforting to me और ये बहुत मेरे लिए कंफर्टेबल है because I'm worshiping the Most High God, क्योंकि मैं सबसे ऊंचे दर्जे के खुदा की परस्तिश कर रहा हूँ, the only God. एक ही खुदा की।